महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। बाप दादा ने सुना कि जो बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है, उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ कोई एक भिन्न भिन्न संस्कार से एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट देखते हो, उस समय उस संस्कार की रिजल्ट भी विशेष सुनाओ, तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है, तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय ये भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो, लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आपको बाप की मुबारक देना, और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार व्रत लेती जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए रोज आता नहीं है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी, तो ये भी टेंशन को खत्म करता जाए, क्योंकि बाप दादा ने देखा है फॉरेन वालों में से
अटेंशन में आए हैं ना तो हो जाए, लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़े। संगठन में ये संस्कार निकलते क्यों? आपके चित्रों में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या कहते हैं ऐसे देवता तो बनना ही है ना। बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, आवो तीर्थ बना है तुमसे ओ अब्बा वो वाले, महक रहा है मधुबन तुमसे। पवित्रता की परख है, वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्मा रूप में देखना, आत्मक स्मृति से बोलना चलना, और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना, सुख देना। ये चेक करो, मेरी वृत्ति, दृष्टि, कृति इसी परमान है। This August, Avyakti Parivar welcomes you to finish the seed of impurity and become completely clean. अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। With special insights by Mohini Didi, followed by Avyakt Murli revision from 1969. Sharings by ancestors. Heart-to-heart conversation with seniors. का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
पिता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। हमने जुलाई के मास में बहुत ही सुंदर तरीके से ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव किया, बाबा की याद की गहराइयों का अनुभव किया और मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताओं का भी वर्णन किया, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया। हम आशा करते हैं कि सभी को हर दिन अलग अलग रूप से अनुभव हुए होंगे और हमारी प्यारी मोहिनी दीदी जी ने भी हमें प्यार से हर बात को स्पष्ट किया, समझाया, अनुभव कराया। तो आप भी हमारे साथ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। और आज हम अपना नया मास शुरू कर रहे हैं, अगस्त का मास, जो कि बहुत ही विशेष मास होता है। हमारी प्यारी प्रकाशमणि दादी जी का मास होता है, हमारे रक्षाबंधन के पर्व का भी मास होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम इस मास की शुरुआत नए विषय के साथ, जो कि बहुत सुंदर है, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। तो आज से हम इस विषय पर अभ्यास करेंगे। रोज़ हमें नए नए पॉइंट्स बाबा की अव्यक्त वाणियों से अव्यक्त इशारे के रूप में मिलती रहेंगी और हम दीदी से भी सुनते रहेंगे। आज का दिन, पहला दिन, आज का विषय, व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अव्यक्त इशारे। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मैच्योरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से पहले पॉइंट है, मीठी मीठी दादी के लिए हर एक के दिल का आवाज है, सबसे न्यारी और सबकी प्यारी। बाबा के हम सब बच्चे हैं, पर हमारी दादी सबसे न्यारी, सबसे प्यारी, बाप समान। पहले हमको बाबा कहता था, आप समान बनाओ। अव्यक्त होकर कहा, बाप समान बनो। तो आप समान बनाने में दादी बहुत होशियार थी। मैं ही बनूं नहीं, मेरे समान बने, परंतु बाप समान बनने में नंबर 1 गई। इतना हर बात में न्यारा और प्यारा। न्यारा बनने के बगैर प्यारा नहीं बन सकते, प्यारा बनने बगैर न्यारा नहीं दिखाई पड़ता। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। दादी प्रकाशमणि जी को ब्रह्मा बाबा ने जिस दिन अव्यक्त हुए अपना हाथ उनके हाथ में दिया, जैसे उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी रखी और दादी जी ने भी बहुत प्रेम से स्वीकार किया। दादी जी में संपूर्ण समर्पण था। दादी बहुत छोटी आयु में बाबा के पास आई और बाबा की हर आज्ञा का पालन, हर प्रकार की आज्ञा का पालन दादी करती रही। दादी की संपूर्ण समर्पणता के कारण बहुत बहुत यज्ञ में समर्पित हुए। दादी की संपूर्ण पवित्रता, कभी भी किसी भी प्रकार से दादी पर कोई भी किसी बात का प्रभाव नहीं आता था और सदा दादी स्नेही रहती थी, सदा ही उमंग उत्साह में रहती थी और सारे दैवी परिवार को, ईश्वरी परिवार को बहुत बहुत खुश रखती थी। तो हम इस मास में दादी प्रकाशमणि जी की विशेषताओं के बारे में कुछ सुनेंगे, कुछ वर्णन करेंगे। आप सभी भी इसी बात का ध्यान रखें कि हमको भी बाप समान तो बनना ही है, परंतु दादी भी एक उदाहरण है। हमें दादी के समान इन सब गुणों की धारणा करते हुए अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। पूरा मास लगा ज्वालामुखी को समझने में। ज्वाला क्या है? बहुत ये प्रश्न पूछते रहते थे। ज्वालामुखी योग क्या होता है? ज्वाला क्या है? बाबा ने ये पूरा मास रोज ज्वाला है स्मृति। जब स्मृति होती है तो ज्वाला जग जाती है। तो बाबा ने रोज, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी मैं दैवी आत्मा हूँ, 29 दिन तक, हम 30 दिन तक ये सुनते रहे कि ज्वाला किस किस प्रकार से, कौन सी स्मृति से ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो बहुत स्पष्ट था और हम सब ने इस बात का अभ्यास भी किया पूरा मास कि एक एक स्मृति को लेके दिन भर में, चाहे हर घंटे में किया, ज्यादा भी किया, तो ज्वालामुखी योग का बहुत अच्छा अनुभव रहा। अगस्त मास तो बहुत बातों के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का त्योहार, जो बाबा हम आत्माओं को उनके प्यार पवित्र बंधन में बांधते हैं और जो इस बंधन में बंधते हैं उनकी सदा हर प्रकार से रक्षा होती है, चाहे वो रक्षा विकारों से, चाहे वो रक्षा व्यर्थ से, चाहे वो रक्षा बाहरी रूप से कुछ भी विघ्न आते हैं, परंतु बाबा उनका रक्षक रहता है। तो ये पूरा मास हम लोग पवित्रता पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये बंधन बहुत पवित्र बंधन है और इसको अगर हम अव्यक्त बापदादा ने जो मुरली में रिवाइज किया कि कोई संस्कार, रोज एक संस्कार पर अटेंशन दो। जैसे आपको पता है कि कोई बात में धैर्यता से काम चल सकता है, पर आप अधीर हो जाते हैं, तो अधीर हो जाते हैं तो हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो ये संस्कार है आपका अधीर होने का ना। तो मैं कैसे धैर्यवत रहूं? तो एक दिन एक संस्कार लो,
देखो, धैर्यता का गुण मैंने धारण किया। फिर कभी कभी किसी के वातावरण स्वभाव के कारण आपकी मधुरता कम होती है, आप मुख से ऐसे शब्द कह देते हैं जो उचित नहीं है। फिर चाहे बाद में आपको पछतावा भी होता है, परंतु ये संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप रोज बाबा ने कहा एक संस्कार पर अटेंशन दो कि आज कौन सा संस्कार इमर्ज हुआ और उस संस्कार के लिए कौन से गुण की धारणा की जरूरत है, क्योंकि कल्टीवेट नया संस्कार बनाना होगा ना। तो नया संस्कार बनाने के लिए देखना पड़ता है, क्योंकि संस्कार कारण है, संस्कार रूट्स हैं, तो उनको परिवर्तन तो करना ही है। तो धारणाएं होती हैं तो पता भी लगता है, पर संस्कार होता है। और धीरे धीरे खुद को पता चलता है कि अभी मेरे में ये संस्कार नहीं है, पहले था। तो जैसे ही वो अटेंशन जाए तो गुण की धारणा करो, शक्ति की धारणा करो, तो वो संस्कार जो है वो मिट जाएगा। कोई भी है, कभी होता है डर का है, कभी किसी बात में हम सभी अलग अलग तरह से बातों में सेंसिटिव होते हैं, वो संस्कार है ना। तो कैसे मैं उस संस्कार को परिवर्तन करूं? संपूर्ण पवित्रता में हम लोग लेंगे एक एक विकार को, उसकी शाखाएं, उसके अंश। आज बाबा ने कहा ना, व्यर्थ संकल्प ही उसकी शाखाएं हैं। तो कैसे व्यर्थ संकल्पों से निर्वृत्त रहें, तो ये अभ्यास रहेगा अगस्त मास में। और बाबा की तरफ से भी अव्यक्त मुरलियों से जो अव्यक्ति इशारा है रोज, वो भी पवित्रता के ऊपर ही रहेगा। पर हम एक जो अव्यक्त बापदादा ने ध्यान खिंचवाया कि बच्चे, हाँ, संस्कार पे अटेंशन दो, व्यर्थ संकल्प न चले। फर्क तो सभी में पड़ रहा ही है, सब अनुभव करते होंगे कि पहले से हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत कम है। पर बाबा कहता है अभी अंश मात्र भी ना हो, ड्रामा का फुल स्टॉप लग जाए, बाबा बिंदु और सिंधु है वो बिंदु लग जाए, आत्मिक स्थिति का बिंदु लग जाए, तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है, उसकी गहराई में जा कर के हम अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि सर्व संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। ये हमारा इस मास का होमवर्क रहेगा। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण पवित्रता के जो व्यर्थ संकल्प से अपवित्रता का बीज है, व्यर्थ संकल्प चलना। चाहे कारण तो कोई बनेगा ही ना। बाबा ने कहा ना, अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो उसको परीक्षा समझ के पार करके आगे चलते जाओ। बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों में भी ये संस्कार रहा हुआ है व्यर्थ संकल्प का। तो बाबा क्या कहते हैं कि क्या करना है अभी? मन, तो क्या कहते हैं बाबा कि अगर मन में मन मना भाव व्यर्थ संकल्प मन मना भाव में लीन नहीं देता है, इस लीन होने नहीं देता है,
इसलिए बाबा कहते हैं कि बीज रूपी बीज को ही खत्म करो। और वो बीज क्या है? तो जब बीज को खत्म करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों की जो अपवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। और वो बीज क्या है? हमारे अपना कोई ना कोई संस्कार। बाबा पुरुषार्थ में फिर अवसर देते हैं एक कि बच्चे अब कर लो। तो ये मास के लिए हमको अवसर दे रहा है बाबा कि कोई भी अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे। देखो ऊपर से तो कितना त्याग किया है ना, तो इतना त्याग करने के बाद भी अंश मात्र भी कुछ क्यों रहे हमारे में, इस पर अटेंशन देंगे। अभी हम सब कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे और उस स्वरूप में आएंगे जो संपूर्ण पवित्रता है और व्यर्थ समाप्त हो। ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। अव्यक्त वाणी। तारीख है 7 जनवरी 1978। विदेशी बाप की विदेशी बच्चों से मुलाकात। अब उसे खुशी खुशी विदाई दो। नॉलेजफुल की स्टेज पर रहो तो कभी धोखा नहीं खा सकते। अमर भव यह वरदान इस जन्म में भी और भविष्य में भी प्राप्त होता है। संगम पर माया से बचने का अमर वरदान और भविष्य में अकाल मृत्यु से बचने का वरदान मिला हुआ है। अमर भाव के वरदान पाने वाले को माया हिला नहीं सकती, दूर से भी नजर नहीं डाल सकती, सदा नमस्कार करती है। सदा स्मृति रखो कि हमें अमर भव का वरदान मिला हुआ है। वरदान वाली आत्मा निश्चय बुद्धि होने के कारण विजयंती होती है। जिन्हें इस वरदान का नशा रहता है वह स्वप्न में भी माया से मूर्छित नहीं हो सकते। बाप द्वारा वरदान मिलना कोई कम बात है क्या?
अच्छा, ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। भंडारे में जाएगा, बाबा का भंडारा है, टाइम पर बिल लगे। मम्मा ने ये पक्का किया था, दीदी ने चालू रखा, भले सब्जी भी नहीं होंगी या अनाज भी नहीं होगा, 10 बजे चेक आएंगी, उसके बाद अनाज आएगा, 12 बजे बिल लगेगा। पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी का जो रिकॉर्ड है ना हमारे यज्ञ का, उस साइलेंस में रहना, आवाज में कम आना, सेवा ऐसी है बाबा करा रहा है। तो ये दीदी ने अनुभव कराया। जब दिल्ली में थी ना, अभी गुरगांव जाओ, मीरठ जाओ, अभी हापुड़ जाओ, अभी सहारनपुर जाओ, मजा एक दिन दिल्ली में कमला नगर में रखे जाओ जी दीदी, तो अच्छा लगता था। फिर बाबा ने टाइटल दिया मस्त फकीर, ओके रमता योगी। फिर दीदी ने प्रैक्टिकल बना लिया। मैं अभी आपको सामने कैसे बैठी हूं, कल अनुभव सुना, भाई खांसी बच्ची, खांस क्यों, बहन को खांसी होती है, दादी को, अरे खांसी होती तो क्या बड़ी बात है, बाबा को होती थी ना, पर बाबा खजाना तो बांटता था ना, क्या बड़ी बात है। थोड़ी खांसी आएंगी, फिर जब बाबा खजाना बांटते हैं तो बेचारी चली जाती है ना, पैटी थोड़ी है। पर सच्ची दिल से मुस्कुराते रहो। कोई मिले ना ऐसा मुस्कुरा जो बातें न करे, ऐसा दीदी से मैंने सीखा। मैंने कहा दीदी तो मेरे से भी कोई कम बात पर फिर भी करते, मैं कहती नहीं, तो मुझे कोई कहते दादी बात न करे, भला क्या अंदर रखे, अंदर रखते क्यों है, अंदर इसलिए तो रही है, मन अंदर मंदिर है ना, मेरा भगवान का घर है ना। अभी जब से बाबा ने बोला है, तो कोई पूछे भगवान कहाँ है, कहाँ है, बात है यहां नहीं। भगवान से पूछो आप कहां रहते हो, प्यारी सी कहानी है गोपी दीदी मस्तानी की, गाथा बड़ी सुहानी है। मस्तानी दीदी मनमोहिनी, मीठी दीदी मनमोहिनी हो, मीठी दीदी मनमोहिनी की प्यारी सी कहानी है। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार।
So yes, in month of July, we did practice our stage of volcanic stage and also experienced powerful remembrance. Each and every day we received beautiful point from bapdada's Murli. Avyakt Murli and Mohini Didi also explained us in deep. I'm sure everyone had wonderful experience being volcanic stage. And now today we are starting our new month, which is month of August. It's very auspicious month. It's the month when we will remember our lovely Dadi Prakashmani ji, and also it's the month for Raksha Bandhan. So very, very auspicious, and now we will have each and every day receiving new point from Bapdada's Murli, and also we will read out the speciality of Dadi Prakashmani ji, remembering her as well. And then new topic for the month is beautiful. Finish the seed of impurity and become completely pure, clean. So today is day 1 and the title, Finish All the Impurity of Waste Thoughts. Avyakt signal. In terms of complete purity, even waste thoughts are seeds of impurity. The majority of your children still have the sanskar of having waste thoughts. The basis of waste thoughts is a mind that does not allow you to become manmanabhava. Therefore, tighten the reins of Srimad and finish all the impurity of waste. Dadi Prakashmani ji's specialities shared by Dadi Janki ji. 1. For our sweet Dadi, the voice from every heart is the same. She is the most unique and the most beloved of all. We are all Baba's children, but our Dadi was the dearest of all. Truly equal to the father, Bab Saman. In the beginning, Baba used to tell us, become like me. After becoming Avyakt, he continued to say, become equal to the father. Dadi was exceptionally skilled in helping everyone become equal to the father. She never thought only I should become like Baba. Instead, her aim was let everyone become like me, that is equal to Baba. Yet when it came to becoming Bab's Saman, she herself became number 1. She was unique and lovable in every aspect. Without being unique, Nyara, one cannot become truly beloved, Pyara. And without being beloved, one's uniqueness is not truly visible. Now we will listen to Mohini Didi ji. Om Shanti. Yes, our destination is high, but also purity is the light of the soul. Purity is light, purity is might. So everything really depends on the power of purity. In Lokik world, there is total impurity, right? But everything they are able to manage. But for us, the purity is required because Baba wants to transform the world, establish new golden aged world. And the first quality of golden aged world is purity, Sato Pradhan stage.
So because we are instrument for that transformation, we are instruments to bring that kind of world. So that is why power of purity is very important. But also when Baba says that accumulate the power of thoughts, and that will help you to have power to discern. And I like that point because power to discern, should I do, there is always choice. But when there is purity, it will be very easy. Of course, in purity, there is honesty. You are altruistic, and many other qualities also come under purity. So, how to have very clear power to discern? So, one is, of course, not to have wasteful thought. But other could be more motivating when we say that when I accumulate the power of thought, the purity, then I increase my power to discern. So if I want to increase power to discern, I need to have that purity. So this month we will focus on that. When I'm in Madhuban, Shantivan, if there is quite a good crowd of sevadharis or surrendered, and ask them that when did you surrender? 80% are at the time of Dadi Prakashvani. 80%. Many were young Kupars, young Kumaris, 15, 16. They go with their family to Madhuban at that time. And Dadi Prakashvani will say, do you want to stay? Stay. So they stayed, and now all of them are like big brothers, good instrument. Everyone has specialized. Month is ending. I definitely want to also thank Raju Bhai for providing us for whole month. Every day, a beautiful point from Avyakt Murli for our understanding, for our practice, and also to help us to create that kind of stage. Like Raju Bhai, he was also, I think, 15, 16 when he came. I was there when all these young ones, they just surrendered. And now they specialize in many things. Some are good in construction, some are good in cooking, some are good in... And they had been really surrendered and serving for how many? 30 years, 40 years, 50 years, So everyone thinks, what was in Dadi Prakashvani that inspired the souls to surrender? Why that doesn't happen now, right? Because it was her quality of purity and very naturally loveful. And of course, she herself was totally surrendered, totally. She never had anything as I and mine, never. No any personal connection. Everything is yagya. Everything is Baba's. And I remember her slogan that he told me one day when I wake up in the morning at 3, then I say to Baba, Baba, you and I, two of us, will take care of this yagya. And that slogan has helped me also, because that's what I also say to Baba. We too will take care of whatever is needed for the yagya. So I think that Dadi was very altruistic, was very loveful. And definitely, when souls are loveful, they are also detached. But Dadi had really lot of love for each one of us. Lot of love. And every time she will say
Dadi Janki, you like to give classes and knowledge. Dadi likes to take everyone for picnic. Everyone time, what you all like, especially double foreigners. And double foreigners use like gulab jamun, samosa and chips, right? And especially in month of February, March, because they make chips out of particular type of potatoes. Because not very far from Shantivan, there is a very young couple and they have this beautiful potato farm. And that's really for chips, no? So Dadi always wanted everyone to be happy, joyful. Even she was serious about Amrit Vela studies and relationships, everything. So we will hear this whole month about purity and also Dadi Prakashmani. So finish all the impurities of waste thoughts. Because last moment of the life, if there is a situation and I get wasteful thoughts, I lose. I won't pass with honor. And Dadi Gulzar always said, in the end, there will be something which will be your last test paper. But if I don't think, I don't have wasteful thoughts, I will pass with honor. And so we have to practice this. In terms of complete purity, so even the wasteful thoughts are the seeds of impurity. The majority of you children still have the sanskar of having wasteful thoughts. So Baba said that the basis of wasteful thoughts is, Baba says, what is it? Mind. Mind does not allow you to become or be in the stage of manmanabhav. When there are wasteful thoughts, you can't be manmanabhav. Therefore, Baba says, do not, Baba said that so Baba says, keep the aim of Shrimat and feel and finish all the impurities of wasteful thoughts. Baba's Shrimat is to be in Manmanabhav. If we keep that aim, then wasteful thoughts will finish. Om Shanti. Shanti Didi. Om Shanti Jodibai. And many, many warm greetings to Avyakti Parivar. Lovely to be with you. And yes, it does feel like a very exciting month to be entering into. Very, very inspiring. I have so many questions and thoughts in my mind because Baba has been giving so much. But first, I just wanted to share something from yesterday.
just before you were going to offer Vogue, I suddenly felt a sweetness from you. And it wasn't anything you were saying or doing, because you weren't doing or saying anything. You were just sitting, getting ready to offer Vogue. But I really felt the vibration of sweetness very strongly. And then, of course, in the Vogue message, Baba talked about being very cheerful and very sweet. And I just couldn't get over this experience of the vibration of sweetness. It really inspired me, because I felt Baba wants me to make such a deep effort that it's the vibration is actually this quality, not just what I say or do, because sometimes people take what you say or do in different ways, but the vibration will always touch the soul. So this inspired very, very deep feelings of what kind of effort should I be making? And Baba has been talking a lot about intense effort. And you're very, very kind and generous. Whenever you speak to us, you always say, what you've been doing is very, very good. But if you can just do a little more, just a little bit more. So in the fitness world, when we talk about making intense effort, some think that means I'm going to train harder and heavier and more challenging, but that doesn't actually work well. There's a difference between training harder and training smarter. Not to train harder, but to train smarter. And I wanted your feelings around intense effort about training smarter. How can we be more smart in our spiritual training? Because I think you're very smart in your training. So any tips about training smarter? We should always remember that in the life, we have to be very natural, right? We cannot be hard. So when intense more is like be consistent, more you are consistent, it accumulates. But if you do it, then you drop it, there is a gap. So then you have to work hard, And if you are consistent and natural, then you are smarter than hard on yourself. And how long you can be hard on yourself. And there are some, it's not good for their mind, not good for body, not good for, so consistent, natural and consistent. When Baba comes, he says, I come to teach you easy Raj Yoga. He could have said, no, Raj Yoga, why easy? Because first when we hear the word easy, keeps us on ease, right? It's easy, right? So same is with each one of us. Some people are intense, like they are too hard on themselves. But one should be, as I say, not hard, but smart, So that means consistent. Beautiful. So obviously the next question would be, consistent about what things will I be consistent on? And I have really been touched by Baba's Murli of June 21st, where he talked about completion connected to self-transformation. And he said just self-transformation. It seems like the beginning of the yagya, there's a lot of self-transformation. And it sounds like completion of the yagya is depending on a lot of self-transformation. And in that, he talked about transformation of sanskars and nature. So first, can you describe what is the difference between sanskars and nature? What exactly am I looking at when we say sanskars and nature? Is it the same thing, or is there something different? Is one built on the other, or what are sanskars and nature? Nature depends on sanskars, right? Mm. So it is by nature you will know what kind of sanskars you have. Mm. Like someone, the way they react or act, that
these are their sanskars, right? So sometimes we say it's all right, everyone has different sanskars. But I feel that, whenever something happens, even I know it's not my mistake, someone else, but I always say that how I do, so that I don't have to face these kinds of situations. So sanskar is nature, and whatever is the nature, from there you can know your sanskars. So with Because respect, sorry, go ahead. in Hindi they call nature as swabhav. That means your feelings, your motivations, your intentions. So I think that in body consciousness, in Copper Age, Iron Age, we used all the vices in interaction with the souls. And all those are, we say karmic accounts. So when two souls don't get along, there is no reason when we listen, but it's sanskar from the past. So that is why Baba says, look at sanskar and transform it. So your nature will change. In the previous sharing, it might have been during the class in Hindi, you had talked about this idea of counteracting the old sanskars, not by, again, being hard or fighting them, but actually using new or different sanskars, which is beautiful. And I think it's so much how Baba works. He's so positive. And he's even said in the past, use your eternal and original sanskars to transform your old sanskars. So going to the very seed of that, and I liked what Daddy Genki was saying, and definitely when I think about Daddyji, so much self-respect. And Daddy Genki was talking about not talking much, and then is it that I'm repressing, keeping it inside if I don't talk about it? No, because Baba's in there. So these two things, the self-respect, and what was in the Bogue message yesterday as well, being deeply cherished or loved by God. Are these two things, if I was training smarter, would these two things be covering a lot of ground if I focused on these two things, the self-respect and being able to receive that love and power from God? No, because what, whole day yesterday, how much God loves us, each one of us. And that creates that feeling, and that means the self-respect of God's love. And then if I am in self-respect, I love everyone, I respect everyone. So this self-respect, this is what Baba has told me you are. So, and this is what I am. Baba's love, then our part, being an instrument, so many things. So just be in that self-respect. And a person of self-respect will always respect others. Never feel challenged by anything. And always knows that Baba loves me. And there are some people, even in Shanti, they give up very quickly. Anything happen, I'm not going to do it. And I say, if God has given you, even whatever there is feelings of others or you are not trusted, doesn't matter. Baba has given me a task and I'm going to do it anyway. It's very interesting that how quickly, I remember when I came to US, I was directly told that, there is someone else. I said, yes, I'm happy. Baba send me. When Baba will say you go, I will go. But I'm not going to go because you doesn't want me or you are not happy. No, Baba send me. So once Baba's love is there, Baba has asked me to do. Even yesterday, when I am going to give up, I said, that's not the right thing. You know, Baba has given us, God has given us, and I have to complete it. He will give me power, He will give me blessing, He will protect me.
So little things happen to make us strong, no? And built up. Just stay by your self-respect and committed also to your task. I had been with I guess 68 years. What wouldn't have happened? But by nature is I don't remember. I just deleted same time. I said I'm now going to put in my computer. Don't allow it to go in the head. I delete it from outside. Why I carry this? So thinking of what Baba has given me, what Baba wants from me, whether he is that supreme teacher, he is the one my record has to be with, right? Many times it happens, I always say, oh, my record is with Baba. Final marks will come from Baba, not by the souls, no. It doesn't happen much, but if it happens, I am telling everyone, take it from Baba. As Baba's task is for yagya, and everyone is, yagya doesn't belong to a person, right? It's Baba's yagya. So don't allow your bhavna to reduce even. Because it's Baba, whether it's offering bhog or anything, do it with bhavna, full bhavna. In your sharing, I'm feeling such a demonstration, if we're talking about training right, of having, we could say, right feelings and right thoughts in the face, or pure feelings and pure thoughts. You seem very natural at that. And I think if we naturally responded with these pure thoughts and feelings, we could save ourselves a lot of trouble. I just want to give an example I had. It was actually a Logic situation. Every once in a while, we get a graphic design project logically, and we were working on it, and it really wasn't going well. The client kept coming back saying, no, this isn't going to work. And I'm thinking, oh my goodness, I don't know if I'll ever give them what they want. It's getting complicated. And rather than trying harder I think Baba stepped into my head. He said, just have really good wishes and pure feelings for yourself and for these souls. Don't even think about the project, just have, and it was amazing how that changed everything. So I want to read an extract from this June 21st Murli and just get your thoughts. It says, because in this Murli, Baba talks about having good wishes and pure feelings consistently all the time. It says, at any time, someone's nature or sanskars can confront you at a time when you do not have good wishes and pure feelings for that soul. So if you have this thought at Amrit Vela, I definitely have to have good wishes and pure feelings for every soul, you will be able to fulfill the thought you had to definitely bring about transformation. So as we go into this month of purity, how important is this direction Baba gave? Good wishes, pure thoughts, as our constant go-to. Because to let go of what happened because of anyone's sanskars, it is very important to elevate myself first, that why I felt like that. And I want to feel good, so have pure feelings and good wishes for the soul. This way, at least I am clear. And then it depends on how that soul wants to make effort. So that heaviness or anything is within me, I want to keep my heart clean. I want to keep my mind very pure. So for that, it's very important to have good wishes and pure feelings for everyone. Even when sometimes we say, no, this soul is not really worth that. But at least for me, my benefit, even it is for someone else, but first I benefit to have pure feelings and good wishes to make myself free and light. That's what we will do whole month, right? Oh, it was beautiful, your thoughts, right? Thank you so Thank much, you, Julie. Didi. Omshanti. Thank you. Omshanti.
Om Shanti. Thank you very much. So tomorrow is Saturday and our schedule from Amritvela 3:30 am to 4:45 am. 6 o'clock meditation will start, followed by 7 to 7:45 am. We'll have Murli class, and then 7:40 am onwards we'll have Charlie Bai's class, as we had been doing since the past 2 days. So that's special for all of us. And then evening, afternoon, there is a youth class, 12:30 to 1:30 p.m. Avyakti youth class, Avyakti children class, 1:30 to 3 p.m. Evening 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take drishti from Didi. पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार।
ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।